We discussed first of all translatory motion, and in case of translatory motion, a rigid body, all the points on that rigid body move with the same velocity and acceleration. So you can even consider that rigid body to be a particle, and you can apply all the formulae of kinematics of a particle which we have studied in chapter number 12 for such a rigid body which is undergoing translatory motion. Okay, the second type of motion which a rigid body can undergo is rotational motion. So as we have discussed earlier as well, जब भी rotation हो रही होती है, so then all points on that rigid body are going to travel along circular paths, except for those points which lie on that axis of rotation. So whenever a rigid body is rotating about a fixed axis, any point P. Now we are going to consider any one point P, which is shown to you here as this point. So any point P located in the body travels along a circular path, although all the points are going to travel along circular path, but for analysis we are going to consider the motion of any one point P which is on which lies on that rigid body. Now since a point is without dimension, it means that it would have no angular motion. However, only lines and bodies undergo angular motion. So in order to define the circular motion of this rigid body, we are going to consider a radial line R, which is shown to you here. And this radial line R is basically undergoing circular motion. As far as the angular position of this rigid body is concerned, at any instant, the angular position of this radial line R is defined by the angle theta. So this is the angle theta which defines the angular position of this line R being measured from some reference axis, which is, say, this axis is being defined as the reference axis. So theta is being defined as the angular position of this radial line R at any instant t. How we are going to define the angular displacement? The change in angular position, which can be measured as a differential d theta, is being defined as the angular displacement which this rigid body has undergone at time t. Its position is defined by theta. At time t plus delta t, its angular displacement is being defined by this small angle d theta as shown to you in the figure. So this is the angular displacement d theta at which this rigid body has undergone during small time interval t plus delta t. जिस तरह लीनियर के केस में आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ds से रिप्रेजेंट करते थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप d थीटा से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. ओके, एंगुलर वेलोसिटी आप किस तरह डिफाइन करते हैं, या लीनियर वेलोसिटी किस तरह डिफाइन करते थे? Change in distance over time. Change in distance over time. So if ds was your displacement, so ds by dt was your linear velocity. बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा के तौर पे डिफाइन है, so you are going to differentiate it once with respect to time in order to get this angular velocity. The angular velocity is being represented by the sign omega. So omega is defined as the rate of change of angular displacement, that is d theta over dt. So if theta is known to you as a function of time, you are going to differentiate it once in order to find out the angular velocity omega. Is this point clear to all of you? Okay, linear acceleration आप कैसे define करते थे? Rate of change of linear velocity, isn't it? Yes, sir. बिल्कुल उसी तरह जो angular acceleration है, it is being represented by alpha. So angular acceleration is the rate of change of angular velocity, that is d omega over dt. So if theta is given to you as a function of time, you are going to differentiate it once in order to find out the angular velocity. Then you are going to differentiate it once again in order to find out the angular acceleration alpha. So alpha is basically d omega over dt, or you can write it as d square theta over dt square. Okay, as far as the line of action, अगर हम इस फिगर को 2D में कंसिडर करें और हम इसका टॉप व्यू देखें,
सो दिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है ये आपके पास या तो क्लॉकवाइज होंगी या काउंटर क्लॉकवाइज होंगी, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कोई तरीका है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का? डू यू रिमेंबर फिजिक्स, मैट्रिक एफएससी की फिजिक्स? What is the right hand rule? Any idea? सर फिंगर्स को अगर हम कर्ल करें रोटेशन के डायरेक्शन में, तो जो हमारा थंब है वो पॉइंट करेगा उसके वेक्टर की डायरेक्शन में, That's पॉजिटिव। correct. That's perfectly correct. अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपके पास XY प्लेन है जिसमें रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, so definitely this axis which is perpendicular to this XY plane is the Z axis. So if we curl our fingers in the direction of rotation, the thumb is going to give us the direction of that vector omega as well as alpha. So आपके पास omega जो है और alpha जो है वो सेम डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। किस वक्त? अगर आपके पास ओमेगा की मैग्नीट्यूड में इंक्रीज आ रही है तो इट मींस दैट अल्फा इज गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन एज ओमेगा। हाउएवर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, यानी बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो रही है एंगुलरली, तो देन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। सो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ ओमेगा, हाउएवर इट्स सेंस ऑफ डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन वेदर ओमेगा इज इंक्रीजिंग or decreasing with respect to time. So if omega is increasing, any body angularly accelerate कर रही है, तो then alpha and omega are going to be along the same direction. However, if the body is angularly slowing down, then alpha and omega are going to be opposite to each other. यानी अगर body clockwise rotate कर रही है तो alpha आपका counter clockwise आ जाएगा if the body is slowing down. Is this point clear to all of you? जहां तक ताल्लुक वेक्टर का है तो both alpha and omega are going to be along the z axis. पॉजिटिव z या नेगेटिव z डिपेंड करेगा कि वो बॉडी एंगुलरली एक्सेलरेट कर रही है या डिसेलरेट कर रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों की आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है, इसकी क्या वजह है? चलें, अब आपको एक ब्लैंक स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। ओके, सो ब्लैंक स्लाइड में हम थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं लीनियर चीजों का और एंगुलर चीजों का, और इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 12, हमने कहा था कि हम डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं एस से, या इसको हम डी एस से डिफाइन कर देते हैं। यहाँ इसके मुकाबले में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने डी थीटा के तौर पर डिफाइन किया। सो इफ s was given to you as a function of time, in this case theta is given to you as a function of time. So in order to define the linear velocity, we say that the linear velocity v is the rate of change of displacement, so ds by dt. इसको अगर याद हो हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ हमने कहा कि ओमेगा विच इज द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो डी थीटा ओवर डी टी के तौर पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। सो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 फॉर द रोटेशनल केस। When we were discussing chapter number 12, we defined the linear acceleration a to be equal to the rate of change of linear velocity, so dv over dt के तौर पे हमने डिफाइन किया था। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है इसको हमने डिफाइन किया एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सो डी ओमेगा ओवर डी टी, इसको हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो इक्वेशंस लीनियर और एंगुलर की बड़ी हद तक कॉमन है। कॉमन मीन्स के इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो बड़ी हद तक सेम है कि जहां जहां जो चीजें लीनियर में आ रही थी वहां राइट साइड पे आपको एंगुलर में वही चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। ओके, जस्ट अ क्विक रिव्यू। चैप्टर नंबर 12 में हमने इक्वेशन नंबर 3 जो काइनेमेटिक्स की थी वो कैसे डेवलप की थी? डू यू रिमेंबर? सर वो टी की वैल्यू इक्वेट करके पुट की थी। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से dt को एलिमिनेट कर दूं तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ जाती है काइनेमेटिक्स की। इफ यू रिमेंबर दैट इक्वेशन वाज ऑफ द फॉर्म a ds इक्वल टू v dv। याद आई ये इक्वेशन?
जी सर। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं राइट साइड पे एंगुलर वाली जो इक्वेशंस हैं इनसे dt को एलिमिनेट कर दूं तो आई एम गोइंग टू गेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अल्फा d theta equal to omega d omega. So this is the equation which you are going to use when alpha is given to you as a function of theta and you are being asked to determine the value of omega. So अगर तो theta is a function of time है so you can find out omega and alpha by simply differentiating it. इसी तरह अगर मैं आपको alpha as a function of time दे दूं और आपसे omega और theta find out करने के लिए कहूं तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे एक दफा और दो दफा तो you can find out omega and theta as well. However, if in any problem relevant to rotation you are being given alpha as a function of theta and you are being asked to determine the value of omega, then you are going to use this third kinematic equation alpha d theta equal to omega d omega in a similar way जिस तरह आपको a as a function of s पता होता था और आपसे v find out करने के लिए कहा जाए तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वेशन नंबर 3 इस्तेमाल करते थे. क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन अगर आपको रोटेशनल वाली याद नहीं भी होती तो आप लेफ्ट साइड पे लीनियर वाली इक्वेशन लिख लें और लीनियर की तमाम टर्म्स को आप चेंज कर दें टू एंगुलर टर्म्स. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके. नाउ इफ यू रिमेंबर हमने जब चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे तो एक स्पेशल केस भी देखा था कि इफ दैट पार्टिकल इज ट्रेवलिंग with constant acceleration, that is a is equal to ac, then for constant acceleration case you develop some equations of constant acceleration, isn't it? यस सर. 3 इक्वेशंस. वो क्या इक्वेशंस थी बता सकते हैं? vf is equal to vi plus at. तो v equal to v naught plus at. इसी तरह आपके पास जो सेकंड इक्वेशन थी s equal to s naught plus v naught t plus half act square, and the third equation was v square equal to v naught square plus 2ac s minus s naught. यही 3 इक्वेशंस थी. यस सर. कहाँ से आई थी ये 3 इक्वेशंस, कुछ याद है? सर ये जो 3 इक्वेशंस हैं ऊपर से ही आई. यानी उन्हीं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को हमने इंटीग्रेट कर दिया था विद इन दैट बाउंड्री कंडीशंस दैट व्हेन t इक्वल टू 0 v इक्वल टू v नॉट s इक्वल टू s नॉट, व्हेन t इक्वल टू t v इक्वल टू v एंड s इक्वल टू s. ऐसे ही है? यस सर. Okay, in a similar fashion, when a rigid body is rotating, and if that rigid body is rotating with constant angular acceleration, that is alpha is equal to alpha c, then for such case when a rigid body is rotating with constant angular acceleration, आपके पास कुछ constant angular acceleration की equations आएंगी. Those equations are going to be exactly similar to the equations of linear motion except that linear की terms को हम rotational terms में कर देंगे. That is omega equal to omega naught plus alpha ct. So this would be the first equation of constant angular acceleration. इसी तरह theta should be equal to theta naught plus omega naught t plus half alpha ct square. This is the second equation, and the third one is omega square equal to omega naught square plus 2 alpha c theta minus theta naught. ये तीनों इक्वेशंस कहाँ से आएंगी? जब आप इन्हीं 3 इक्वेशंस को बाउंड्री कंडीशंस में that at t equal to 0 omega is omega naught and theta is theta naught, at t equal to t omega is omega and theta is theta. इन बाउंड्री कंडीशंस के दरमियान जब इंटीग्रेट करेंगे तो you are going to get some equations of constant acceleration which are shown to you here. Now take a look at these equations and their relationship. जहां जहां लीनियर टर्म्स आ रही थी वो v हो तो ओमेगा बन जाएगा, s हो तो थीटा बन जाएगा, a हो तो अल्फा बन जाएगा. तो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस जहां लीनियर टर्म्स में आ रही थी यहां वही इक्वेशंस एंगुलर फॉर्म में भी आ गई हैं. So if a rigid body is rotating with constant angular acceleration, then for constant angular acceleration case you can directly use equation number 5, 6 and 7 for analysis. However, if that rigid body is not rotating with constant angular acceleration, then you can use these general equations 2, 3 and 4 in order to solve
that rigid body rotational problem. Is this point clear to all of you? जी क्लियर है ये चीज, या किसी को कोई क्यूरी है रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज इक्वेशंस? अरे सर चलिए, फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि 10:02 हो गए, वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट. इंशाल्लाह इससे रेलिवेंट बाकी जो मैथमेटिक्स है वो भी, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है रोटेशन वाला. अभी तो हमने सिर्फ यानी ओमेगा, अल्फा और थीटा की रिलेशनशिप देखी है. अब इसको ए और वी से कैसे रिलेट करने हैं वो हम थोड़ा सा देखेंगे इन नेक्स्ट वीक लेक्चर. नेक्स्ट वीक हम इसी रोटेशन को कंटिन्यू करेंगे और फिर जनरल प्लेन मोशन में प्रोबेबली रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस वाला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीक हम इंस्टेंटेनियस सेंटर और एक्सेलरेशन को जो है वो देख रहे होंगे. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रेलेवेंट टू टुडेज लेक्चर, you can ask it